सी अबाउट मैकेनिज्म ऑफ मास ट्रांसफ़र। मास ट्रांसफ़र के कुछ बेसिक मैकेनिज्म देखेंगे, जिनके बारे में हम बेसिक चीज़ें समझेंगे, व्हाट इज़ द मैकेनिज्म एंड हाउ दे वर्क. And some first mechanism is a diffusion. Here diffusion is a microscopic result of random molecular motion on microscopic scale from higher concentration to lower concentration. The diffusion is a microscopic result of random motion, the random molecular motion. So microscopic level पे जो molecular का जो motion होता है वो डिफ्यूजन प्रोसेस में होता है विद द हेल्प ऑफ द फ्लो ऑफ हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन. जो मॉलिक्यूल्स होते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे वो हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन में फ्लो करते हैं. एंड सो सेकंड वाज इट कन्वेक्शन. Mass transfer by the convection involves the transport of material to boundary surface. Mass transfer by convection involve the transport of material to boundary surface such as a solid or liquid, and a moving fluid or between two relative immeasurable moving fluids. ये जो होता है सरफेस बाउंड्री कंडीशन पे होता है, टू सरफेस बाउंड्री सरफेस पे एंड टू मूविंग फ्लूइड के बीच में होता है ये कन्वेक्शन. और जो फ्लूइड्स होते हैं वो रिलेटिवली इनमिसेबल मूविंग फ्लूइड्स होते हैं. थर्ड वन इज ऑस्मोसिस. बाय ऑस्मोसिस प्रोसेस molecular solvent tends to pass through semi-permeable membrane from less concentration solution into the more concentration solution. In osmosis, the molecule solvent passed through a semi-permeable membrane, which is from less concentration to higher concentration में flow करता है. Fourth one is ultrafiltration. In fourth one is next one is ultrafiltration. Ultrafiltration is very variety of membrane filtration in which force leak like pressure concentration gradient lead to separation through a semi-permeable membrane. In ultrafiltration, a variety of membrane filtration happen. membrane के variety membrane के द्वारा filtration होता है. in which force यहाँ पे जो प्रेशर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड ये जो प्रेशर फोर्स होते हैं वो सेपरेशन में हेल्प करते हैं थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. डिफ्यूजिव, हाँ मतलब डिफ्यूजिव क्लियरेंस देख लेते हैं. अ रिजल्ट ऑफ रैंडम मोलिकुलर मोशन एंड कन्वेक्शन क्लियरेंस. द वाटर मॉलिक्यूल पासिंग थ्रू सेमी परमेबल कैरी विद देम द solutes in their original concentration, and solute water molecule passing through by semi-permeable in convection clearance with the solutes in their original concentration. In fluids influenced by concentration gradient of the solute in diffusive clearance में influenced by result of influenced by concentration gradient of the solute and its molecular weight as well as the permeability membrane to the solute. इसमें influence होता है concentration gradient and molecular weight and the molecular solute permeability of membrane के जो permeability है वो भी इसमें influence काम करता है. This is called solvent drag phenomena. This is called as a solvent drag phenomena. Water can be made to move across semi-permeable by the application of either hydrostatic or osmotic gradient. Water molecule convection clears the water passing through by carry solute with the concentration original, and there is a either hydrostatic water can be make cross semi-permeable को pass करता है with the help of hydrostatic or the osmotic pressure. Convection mass transfer is a rarely diffusion in combination with advection molecules being carried along with the motion of fluid. Convection mass transfer is a rarely diffusion in combination with advection. This is the mechanism. These are the mechanism of mass transfer, and their diffusion clearance, and also have cover convection clearance.